ठीक है, so start with this section. This is our team. So this is white in background and the font color is again 36. It's almost similar to the there जिसमें टॉप की पैडिंग इतनी थी, यहाँ पर 5 की तरह, but it's a bit different. So the background is not this, the background is triple F, white है, but the color is same and the padding is also same. So this is not wrapper, this is wrapper 7. But ये section होगा आपका, so this is wrapper 6. Now एक section plus wrapper 7 with container. तो हमेशा रैप में कंटेनर में रो. Because we need H2, तो H2 के लिए कौन सा कॉलम होगा? 4, जिसका H2 क्या है? Our team. See, now see, आपने कोड ज़्यादा टाइप किया नहीं and it's automatically done because we are repeating using the same thing. जैसे H2 को हमने repeat किया, wrapper को हमने repeat किया, column को हमने repeat किया. So thing is कि now the things are very easy. ठीक है, तो see heading देखिए, it's done. Next content क्या है? In another row आपके 4 के 3 columns आ जाएंगे. This is the first row, then another row और इस row के बाद एक बटन होगा see more. तो ऑलरेडी जो बटन हमने पहले बनाया था, this one, सेम बटन यहाँ पे इस रो के बाद ऐड कर दो यहाँ पे. See? In the middle row, we got 4 equal columns. So यहाँ पे column 4 होंगे 3. This is the first, second and third. ठीक है. So in these columns, there is a picture. ये round जो circle है, this is the picture. Picture के ऊपर आ रहे हैं social medias. And ये तीनों social medias absolute है, because ये picture के ऊपर आ रहे हैं. They are not occupying space. तो ये picture है. Picture में 3 social medias हैं. Then एक left में gap है. तो you can check this gap is how much. तो ये left margin 100 है. तो इसी में आपका H2 है and then the content. So this is the column 4. In the column 4 हम लोग एक custom div देते हैं team. In the team सबसे पहले picture है, then है social media. तो social में your 3 allies and A with span font awesome. तो पहला icon कौन सा है? Twitter, Facebook and Insta. तो first icon is Twitter, Facebook, थर्ड इज Instagram. ठीक है, तो ये मेरे 3 hyperlinks हैं. और आफ्टर सोशल मीडिया द नेक्स्ट इज अ div जिसमें लेफ्ट से 100 का गैप है एंड 100 का गैप लेफ्ट से टॉप से भी गैप है. टॉप से इसका 50 गैप आ रहा है. तो डू वन थिंग, ऐड अ div नेम गैप. ठीक है, इसमें आपकी S3 है जिसमें टीम प्लेयर का नेम है. मेंबर इज माइकल जो, देन CEO एंड फाउंडर. And after that, there's a small paragraph with some text. This is a paragraph, 14 pixel. ठीक है, तो ये है हमारी एक डिवीजन. दिस इज फर्स्ट कॉलम 4. और ऐसे टोटल कितने होंगे? ठीक है, इसमें पिक्चर एक ऐड कर लो. तो पिक्चर्स आर नॉट ओरिजिनल. तो डू वन थिंग, जस्ट कॉपी द सर्कल, यूज द फर्स्ट टूल. ये अवतार आ रहा है यहाँ पे, तो डू राइट क्लिक, डुप्लीकेट, न्यू डॉक्यूमेंट, देन Alt IR. ओके सॉरी, इन विंडोज फॉर मैक यू नीड टू प्रेस ट्रिम. देन इसको सेव फॉर वेब करो एंड चूज अगेन JPEG यूज कर लो. एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है? बॉर्डर रेडियस, the name is Michael. Save the picture.
So this is my picture, img/Michael, और होगा माइकल जो इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो ऐसे हमारे पास कॉलम 4 है 3, फर्स्ट सेकंड 3, ठीक है, ये 3 ऐसे आ रहे हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव डन विद द पिक्चर, तो पिक्चर है और कस्टम डिव का नेम क्या था, डॉट टीम, टीम डिव, टीम के अंदर और एक डिव थी गैप, गैप का मार्जिन कितना था, टॉप था 50, राइट 0, बॉटम 0, लेफ्ट था 100। तो ये गैप वाली डिप थी, दिस वन, जिसको मैं गैप दे दिया, ठीक है। गैप में एक H3 एंड P है, तो गैप का H3 कलर दिस, गैप का P कलर समथिंग एल्स 36, P का font size 14 and the paragraph is thin. ठीक है, this is on it, ठीक है, and the small tag is also there. This is the small tag, small है 14 and gray. This is a gray color, small, ठीक है। P के टॉप पे गैप है, जिसकी लाइन हाइट चेक करो कितनी आ रही है, दिस इज 14 पिक्सल बाय 22 लाइन हाइट। तो P का साइज एंड P की लाइन हाइट थी 22 पिक्सल्स, ठीक है, दिस इज 22 लाइन हाइट। P का फॉन्ट साइज 14 है, P का कलर 36 है ना, ओके, गैप का P, एंड नाउ हमें टॉप गैप चाहिए, यूज रेक्टेंगल, तो P को टॉप से 20 पिक्सल्स का मार्जिन देते हैं, सो दैट ये ऊपर से गैप भी ले ले, ठीक है। सोशल मीडिया एब्सोल्यूट होंगे, स्पेस नहीं लेंगे, एंड जो पिक्चर है उसका जो टॉप गैप है मींस गैप फ्रॉम दिस, वो वर्क टिप का आ रहा है, दिस हाइट इज 80, एंड बॉटम से जो ये गैप आ रहा है दिस इज 40। तो डॉट टीम को मार्जिन देते हैं, टॉप था टॉप गैप, बॉटम 30, दिस इज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए कस्टम क्लास है, डॉट सोशल विद पोजीशन एब्सोल्यूट। तो सोशल मीडिया में वी गॉट यूआई, तो सोशल मीडिया की लिस्ट है, लिस्ट का डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, लिस्ट की लिस्ट आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम के ए का डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, ए की विड्थ एंड हाइट इक्वल, check this is the ellipse पे कंट्रोल क्लिक करो, दिस इज 50 by 50, border radius and background, font color, ठीक है नहीं, टेक्स्ट सेंटर में आएगा तो यूज टेक्स्ट लाइन सेंटर, और वर्टिकल सेंटर में लाने के लिए हाइट की जगह यूज करो लाइन हाइट, ठीक है ना। इसका फॉन्ट साइज चेक कर लो यूजिंग टी, तो ये फॉन्ट ऑसम है एंड दे आर 24,
ठीक है, बट इनके बीच में गैप कितना है और इनकी पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर पोजीशन एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट तो हमने दे रखा है, सी दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग स्पेस, पर इनकी पोजीशन यहाँ पे आएगी। दैट मीन्स हमें इसको राइट एंड टॉप देना पड़ेगा, एंड किसके अकॉर्डिंग, टीम, सो टीम शुड बी नॉन स्टैटिक मतलब रिलेटिव। अब हम इसका टॉप दे सकते हैं, तो टॉप कहाँ से आएगा, टॉप आएगा टीम से, तो दिस इज द टॉप, कितना आ रहा है 60, और राइट हम यहाँ से दे सकते हैं जहाँ से कॉलम है मतलब टीम है, ये भी 60, तो दिस इज एब्सोल्यूट, जिसका राइट 60 एंड टॉप 60, तो टॉप से 60 राइट से 60, इन बिटवीन गैप के लिए वी नीड टू ऐड मार्जिन, सी दिस इज द मार्जिन विथ 10, तो हर अलाई को मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सेल्स, एंड नाउ वी कैन सी ये परफेक्ट सेंटर में आ रहा है, सीरियस, ये बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में आ रहा है इसके ट्विटर के, सीरियस, ये भी इसके परफेक्ट सेंटर में था। So this means our PSD is pixel perfect. So it's pixel perfect now. There is no hardly a single pixel gap. तो ये कंटेंट हमारा प्रॉपर आया, these are pictures, ये सोशल मीडियाज, यहाँ पे नेम, को फाउंडर प्रोफाइल और नीचे सी मोड के बटन, ठीक है। नेक्स्ट है column 4, this is not a section, it's a normal div, so dot wrapper 8, with background this and font color this. Now in this all the text is center, so use text line center, ठीक है, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज कर लेते हैं इसमें। तो इसमें कॉलम 3 है, 3 कॉलम 3 इंटू 4 होंगे, दिस इज रैपर 8 कंटेनर देन रो देन कॉलम 3, तो ये 3 कॉलम है। इन दिस कॉलम देयर इज स्पैन डॉट एफ ए, ठीक है, फर्स्ट आइकन कौन सा है, दिस इज गिफ्ट, सेकंड इज अ पैराग्राफ, थर्ड इज कैप्शन, दिस इज थिन, ठीक है, सो वी नीड 3 4 कॉलम्स मोर, 3 4, तो हमारे 4 कॉलम्स हैं। चेक द फॉन्ट साइज, तो पहले फॉन्ट आसम का फॉन्ट साइज कितना है 72, ठीक है, अंडू, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कितना है 72, ओके, एंड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 18 है, एंड द टेक्स्ट इज बोल्ड, इंस्टेड ऑफ स्मॉल वी कैन यूज बी टैग, तो रैप 7 का फॉन्ट साइज कर दो 72, ठीक है, तो दिस इज 70, दिस इज 72, बट बी का फॉन्ट साइज 14 है, 1 सेकेंड, बट इसकी लाइन हाइट, ओके, तो वन थिंग फॉन्ट साइज ऐसे मत दो, ये इनहेरिट हो रहा है ना, पैन एंड पी फॉन्ट, ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, आइकन आ जाएगा, नाउ एट द गैप, तो टॉप गैप इज हाउ मच 86, okay, to one then make it 80, ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम गैप इज 80 which is 80 पिक्सेल्स, ठीक है, तो टॉप और बॉटम से 80 का गैप। चेंज द आइकन्स, तो फर्स्ट आइकन इज ओनली गिफ्ट, सेकंड क्या था, इट्स कमेंट्स, कॉफी, ट्रॉफी, गिफ्ट, कमेंट्स,
O, hollow, then coffee and trophy. So you also need to do one more thing. आपको font, you need to match the font awesome family, because if I'm using a CDN, so right now the latest version of font awesome is 6. This is font awesome. Suppose if I'm using font awesome 6, see the version 6. If I'm using font awesome 6, the fonts will be different. So just make sure कि आप font awesome का current version use करो. See, this icon is different. This is different. See, font social media we have to use FAB brand, and even these icons are different. See, now this is font awesome 6 version. If we choose font awesome 5, see again, now this icon is okay, but others are different. Then choose 4. And always prefer the minimal version. Yeah, this icon is perfect. This is 4. Okay, so the version which I am using is font awesome 4. See, this icon is perfect. ये चारों perfect work कर रहे हैं. ये भी चारों सभी perfect है. And see, social media भी perfect आ रहे हैं. I think Instagram is different. One second. One sec. This is half fade ना. Instagram is a bit different. ये square है, इसमें ऐसे fade है. Okay. Let me check the offline version. Yeah, this one is perfect. So this means I need to use a previous version of Font Awesome. इससे भी previous version कुछ और है ये. So even I can check which Font Awesome I am using. So this is the Font Awesome. Okay, this is 4.03. ठीक है ना? तो ये 4 का ही 4.03. So there's a big difference. Means almost all icons are there, but थोड़ा सा difference है. But just minor difference, not major. ठीक है. तो इसके बाद next division क्या है हमारी? This one is done. ये क्या होगा? Again a section जिसमें white is the background, then एक row में H2, and then this is 8 and 4 columns. So this is section white, top bottom 100 gap. So I copy this wrapper 7 and just make it wrapper 9. But this is the section. So sorry. First we need a column for H2. Skills. ठीक है, तो ये कॉलम आ जाएगा, टॉप एंड बॉटम 100 गैप है. After that there is another row with 8 and 4 column. So this is first row, this is second row, and इसमें column होंगे 8, and the next one is column 4. 8 and 4 के दो column. जो 4 में content आ रहा है, that is called accordion in JavaScript. इसको JS या jQuery में we can say accordion, this one, the right hand side. तो ये accordion है. On the left hand side यहाँ पे आपका एक तो आपकी div आ रही है, this is the gap. The gap div जो वो repeat होगी यहाँ पे. And this is the क्या कहते हैं, progress. So this is the pie chart. So you can use a pie chart, but for that again we need JavaScript. So dynamic charts बनेंगे JavaScript. Right now you can use a picture, but it's recommended to use a pie chart later on. So I'll do one more thing. I'll just copy this with the text and save. Let's see, ये SVG convert होगा. No, you can copy. This is SVG, I think. This one is copied. इसको हम SVG copy कर सकते हैं. This one is okay. This is an SVG. Width 185, height 185, 175.
but again we need a text inside, so for that we have to do we need to use position absolute again here. So do one thing, just leave them because they're static hai. We need dynamic one in future. So there again we need 4 equal 1 2 3 4. So in this column again add a row, और 4 equal column किसमें आते हैं? Column 3 में. So there you can use a pie chart. 1 2 3 4. This is the 4 pie charts. So 1 2 3 4 pie chart, right side पे accordion. And after pie charts with this row, there's a gap there. इसमें H3 है. Then P है. 2 paragraphs. ठीक है, तो ये कंटेंट भी वर्क कर रहा है. This is the right hand side. This is the accordion. और accordion कैसे बनेगा आपका? You will ally unordered list plus accordion. This is li, total allies of 5. In the li, this is hyperlink, the first portion with the rocket icon. Ally with A may have span dot fa. First icon is rocket. And then text. This is hyperlink and this is a paragraph. Paragraph is 10 to do okay, so we need 5 different allies. ठीक है, and the first ally is active right now क्योंकि उसका text visible है. Two, 3, 4, 5. Icons are different. Rocket, lock. This is lock. Oh, I think. नहीं. Unlock होगा ना? The icon is unlock, not lock. First है ये, then third unlock है. Then this is the you call pointer. No, navigation नहीं. इस आइकन क्या नाम देंगे हम लोग? GPS. Okay, location arrow. ठीक है, location arrow, microphone and phone book. It's telephone. Or receiver. Phone. Last is book. ठीक है, तो इंटरफेस देने के लिए डॉट accordion की allies में active ally, all allies and active ally. Allies A. This is active allies A. So the border है, this is the border of A only. तो A का डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा. ठीक है, border. Shape width height 350, height 50 और
this is 10 pixel rounded, 360 stroke color है EB. Instead of padding, use line height 50. There is a single line, तो इसकी total height 50 आ जाएगी. And now for the left and right gap, यहाँ से padding देते हैं. Padding 0/20. ठीक है. तो फर्स्ट एक्टिव जो है उसके एक का कलर रेड होगा, बाकी का कलर दिस. ठीक है. तो ऑल आर ग्रे एक्सेप्ट दिस. ठीक है. मार्जिन दे सकते हैं 10. ठीक है. देन कॉर्डियन की LIKP पैराग्राफ है. ए का बॉटम मार्जिन है तो ठीक है. इसमें ऑल द पैराग्राफ्स आर हिडन एक्सेप्ट एक्टिव से. तो जो एक्टिव है उसका P का डिस्प्ले ब्लॉक है. ठीक है. दिस वन, बाकी सब हिडन है. और इनके राइट पे एक कोलैप्स आइकन भी है. दिस वन, तो ये माइनस है, ये प्लस है. ये वी कैन ऐड दिस यूजिंग बिफोर और आफ्टर. तो ये ए है, ए के बिफोर कंटेंट क्या होगा माइनस. तो दिस शुड बी, एक सेकेंड, okay, this is before, no, this should be after. तो आफ्टर इट हाइफन, बट इसकी पोजीशन राइट है. तो डू वन थिंग, इसे फ्लोट राइट कर दो. ये सभी हाइफन है, बट वन सेकेंड, फर्स्ट इज हाइफन, बाकी सब तो प्लस है ना. तो मेक श्योर ये आइकन प्लस हो. तो ऑल आर प्लस एक्सेप्ट द फर्स्ट. तो जो ए राइट डॉट एक्टिव है उसके एक का आफ्टर प्लस की जगह माइनस. दिस इज माइनस, अदर्स आर प्लस. और दिस इज, तो इसको इंटरेक्टिव बनाने का काम जावा स्क्रिप्ट है. we'll do later on. इनका फॉन्ट साइज भी था इसमें 14. ठीक है. सो ये बन गया. नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट करते हैं. एंड दिस इज द फॉर्म ये है. और इसमें 3 कॉलम्स एम्प्टी हैं, 3 लेफ्ट एम्प्टी, 3 राइट एम्प्टी. इन बिटवीन दिस इज द फॉर्म. दिस इज रैपर 10. It's not a section. तो बैकग्राउंड है this and the font color is this. पैडिंग टॉप बॉटम से चाहिए. $22. Container row column 3, 3, 3. Middle column is 6. In this we got a form. Okay, with 2 inputs. First input is email, placeholder है, required है, and there is no label, so use area label.
So when label is not available, use area label, and the text of button is subscribe. Okay, so this is my interface. Button के लिए we have a class already built in button class btn. तो btn ये है मेरा बटन. तो बटन को मुझे कलर देना पड़ेगा dot wrap temps dot btn. background should be white. ठीक है, तो ये बटन है. एंड wrap temp का इनपुट टाइप ईमेल का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा. ठीक है, बॉर्डर नन होगा. हाइट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, तो इसकी हाइट के इक्वल 30 पिक्सल. ठीक है, बटन को फ्लोट राइट कर देते हैं. इनपुट की विड्थ इंक्रीज करेंगे. इनपुट है अप्रॉक्स इतना 370. तो फॉर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर यूज मैक्स विड्थ so that responsive is over here, but it's not working. Width 370. Okay, placeholder ऐड कर दो इसमें. Okay, it's Proxima Nova thin 36 white. Proxima thin. To change the placeholder color and the font color. तो font color white होगा and even placeholder color भी white होगा. ठीक है, okay, so this is my form control. It's functional. Okay, in the next these are first column is empty, first left, and these are two columns with the custom div. So this is 7.5, this is A6. ये गैप कितना आ रहा है 28. तो wrap 11 padding 20/0 background 7 color white. So यहाँ पे meter container with row and first column 1 which is empty. Next content is at column 2. Column 2 में add a custom div class. Let's suppose ये है क्या? Let's suppose clients. ठीक है, तो first was 2, 3, 4, 5 and an empty column. This table how much? Using control click. Full width height 95 और background है A6.
Okay, width. use class client, तो ये 6 ऐसे आ जाएंगे. There's the icon inside. These are last two sections now. The first is contact us. It's a section of last simple वो है div 25. This is AB. Wrapper 12, 13. 13 का background क्या है? ठीक है, इसमें padding this and text and center है. This is background. This and font color 36. और padding 100. First is the section class wrapper 12 and the 13 it's a simple div or it's a footer. ठीक है, तो ये मेरा footer है. This is my div. इस div में first of all एक h2 आएगा, तो dot container, then row, column 4 and then h2 contact us full stop. तो ये मेरा heading आ गया. And इसके बाद next content क्या है मेरा? So after h2 the next is a form, then some another social media. Sorry, this is not form. तो पहला है h2, इसके बाद एड्रेस टैग है. ठीक है, इसके बाद अनदर सोशल मीडियाज है, बट डोंट यूज द सेम सोशल क्लास क्योंकि वो सोशल क्लास एब्सोल्यूट है. उसको कुछ और दे दो. आइकन्स. टॉप रैप का एड्रेस. आइकन्स. ठीक है. नाउ दिस वन इज माय फॉर्म. तो ये पूरा हमारा एक फॉर्म है विद 2 रोज. तो फर्स्ट कॉलम आपका कितना है? दिस इज 4, दिस इज 4, देन 8 एंड देन 4. ठीक है, तो आफ्टर दिस भी ये एक रो. ठीक है, तो आफ्टर दिस रो इज फिनिश्ड. ये था हमारा कॉलम 4. ठीक है, तो फर्स्ट रो एंड देन देयर इज माय फॉर्म. तो ये है मेरा फॉर्म. इसमें भी एक रो होगी. ये कॉलम्स लेने हैं. तो फर्स्ट कॉलम हमारा 4 है, सेकंड 4 है, देन 8 है एंड देन एक और 4 कॉलम है. ठीक है, एंड नाउ इसमें हमें देने हैं लेबल्स. इनपुट. तो इसमें टेक्स्ट कौन सा है? इनपुट टाइप ईमेल है. दिस इज नेम टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट एरिया. तो इनपुट टाइप पहला है ईमेल और इसका टेक्स्ट क्या है? एनवेलप. ईमेल. तो ये ईमेल का एनवेलप है. This input type email which should be required. The first label in this column. Second label यहाँ पे this is icon pencil और यहाँ पे name आएगा. Input type text. Third में label है but icon is and this is pencil. ये user था. This is not input. This is message.
यहाँ टेक्स्ट एरिया आएगा, लास्ट में बटन चेक सर्कल हो, सबमिट। ठीक है, तो ये मेरा इंटरफेस है। ईमेल नेम दिस, यहाँ पे लेबल्स को बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर कलर 362 पिक्सल के बॉर्डर हैं, यू कैन जूम दिस, ये 2 पिक्सल के हैं। और आपका 13 के लेबल्स, और हर लेबल का डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, एंड बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो ये बॉर्डर ना इनसाइड गैप के लिए बिट पैडिंग, ठीक है ना, तो ये पैडिंग आ गई। टॉप बॉटम गैप के लिए मार्जिन तो 13 आ रहा है। डू वन थिंग, मार्जिन देते हैं टॉप बॉटम 15/0। ठीक है, तो ये ईमेल आ गया, ये नेम। ओके, अब आते हैं कंट्रोल्स। इनपुट 2 हैं, टेक्स्ट एरिया 1 है, बटन 1 है। इनपुट का बॉर्डर नन, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, सेम फॉर टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो ये ईमेल हो गया, ये नेम हो गया, ये टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया का टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, बस उसके लिए वर्टिकल अलाइन देना पड़ेगा। टॉप, ये टेक्स्ट ऊपर आ गया, इसमें रीसाइज आ रहा है, तो रीसाइज हटा दो, ये ड्रैग नहीं होगा। और बटन को भी मार्जिन उतना ही दो, 15/0। बटन का डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, विड्थ कर दो 100%, एंड बैकग्राउंड white. So the height of button should be equal to the text area. This width is 100, heights it's 100 pixels. Hundred whites 130. This is button is on the margin, padding width here. It's 100. That's 100 contains 66 height here. 100. Okay. This is height 100. बटन की हाइट 100। ओके यार, ठीक है, दिया परफेक्ट। फिर इसके राउंड कॉर्नर्स करने के लिए, अच्छा दिस नो बॉर्डर, बटन को बॉर्डर हटा दो, बॉर्डर नन, एंड बैकग्राउंड वाइट, बट दिस इज वाइट। ओके, रेफर 12 का कलर नहीं आया था, ई भी नहीं था। ओके, सी ना, तो नाउ दिस कलर इज ग्रे, तो ये वाइट है। इसके राउंड कॉर्नर्स होंगे 10। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट का कलर रेड भी है। तो सबमिट के टेक्स्ट का कलर रेड है, इसमें जो स्पैन है उसका साइज ज्यादा है। 24, 36, 36। ठीक है, और वर्टिकल अलाइन सेंटर मिडल।
ठीक है, तो ये बटन मेरा वर्क भी कर रहा है. So this is my button which is responsive now. ठीक है, so yeah, I think this is enough. Means we have tried कि हमने इसको 2 hours में मैक्सिमम चीजें इसकी कंप्लीट की हैं. ठीक है, so this is the first PSG.